सो लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में। आप मैं इस सेमेस्टर में क्या मैं पढ़ाऊंगी आप सबको, व्हाट आर द टॉपिक्स, एंड देन today we will focus on the theoretical approaches and concepts. What different writers, जो different authors होती है, different writers होती है, उन लोगों ने किया एक्सप्लेन किया है अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में, जो अर्बन सोसाइटी के बारे में, टाउन सिटीज शहर के बारे में, टाउन्स के बारे में क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। जो मैंने अभी कहा था, डॉक्टर बारकोनी विल टीच यू अबाउट रूरल सोशियोलॉजी, अबाउट रूरल सोसाइटी, विलेज, रूरल एरियाज, एंड second semester my paper will be about urban sociology, that is about the urban societies, cities and towns. So let us see today what we will be discuss. So today we will discuss mainly the theoretical approaches, जो different writers और different authors ने क्या explain किया है जो urban sociology के बारे में। Unit 6 we will discuss about स्पेशियल इकोलॉजी, वो चिकागो स्कूल थ्योरी है जो अमेरिका से है। एंड यूनिट 7 सोशल साइकोलॉजी के थ्योरीज क्या कहती है जो शहर के बारे में, अर्बन सोसाइटीज के प्रॉब्लम में। एंड यूनिट 8 टॉक्स अबाउट सोसाइटल स्पेक्ट्रम, दैट इज रॉबर्ट रेडफील्ड। एंड यूनिट 6 विल फोकस ऑन द इंडस्ट्री, and unit 10 will focus on the post industrial के बाद। तो हम देखेंगे यूनिट 6 सिटी ग्रोथ के बारे में, that is spatial ecology, and उनके समाज के social psychology, that is about the way of life। unit 8 Robert Redfield, unit 9 industry, unit 10 post industrial। so let us see unit 6 first। in unit 6 पहले चिकागो स्कूल, चिकागो एक अमेरिका के शहर में है। एक इन सोशियोलॉजी चिकागो स्कूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल। थ्योरी होती है, एक राइटर के ग्रुप है जो चिकागो स्कूल में अमेरिका में है, जो अर्बन सिटीज के प्रॉब्लम के बारे में, शहर के प्रॉब्लम के बारे में मेनली दे टॉक्स अबाउट, दे राइट अबाउट। वो लोग राइटर्स है, वो लोग समाज के जो पोल्यूशन, पॉपुलेशन, माइग्रेशन जो इश्यूज होती है, एम्प्लॉयमेंट शहर में जो प्रॉब्लम, वो लोग अर्बन सोशियोलॉजी में पॉपुलर है। जो राइटर्स है दैट आर पार्क, लाइक रॉबर्ट ई पार्क। रॉबर्ट ई पार्क इज वन ऑफ द मेन पायनियर इन अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी में एक राइटर, पॉपुलर राइटर है पहले, नंबर 1 रॉबर्ट ई पार्क। सो पहले देखते हैं जो क्यों चिकागो स्कूल जो शहर के बारे में, अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन समाज के बारे में, टाउन सिटी के बारे में वो लोग क्यों पॉपुलर है, माहिर है इस समाज को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो वो लोग इमर्ज हुआ है अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मीन्स 1901 to 199, that is 1901 to 2000, that is the 20th century. We get at the end of the point. So I'll just show you the early 20th century, that is in the 1901 to 2000 between. We are now in the 21st century. It started with 201 to 2100. अभी हम 21st century में, 21st century में काउंट होते हैं, that is started with 2001 से शुरू हुआ था, अभी एंड होंगे 2100 में, वो 21st सेंचुरी। तो 1901 to 2000 जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, हमारे देश को इंडिपेंडेंस हुआ था, वो है 20th सेंचुरी में। तो इस 20th सेंचुरी के दौरान एक चिकागो स्कूल होते हैं जो अमेरिका में है, उन लोगों ने एक रिसर्च किया था, साइंटिफिक रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च। वो लोग दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लोग उन लोगों ने एक फाइंड आउट किया था रिसर्च में दैट जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल इकोसिस्टम में, जो नेचुरल इकोसिस्टम है और जो हमारे ह्यूमन कम्युनिटी से संप्रदाय है,
कम्युनिटीज है, ये कनेक्शन और रिलेशनशिप और लिंकिंग और उनका रिश्ता, दे आर कनेक्टेड। तो उन लोगों ने एक फाइंड आउट किया है जो हमारे नेचर
सो इस वीडियो में बर्गेस ने कहा था that these are connected. That बर्गेस ने चिकागो स्कूल में मैंने क्या कहा था, सॉरी फॉर द नेटवर्क इश्यू, दैट पार्ट ने एक्सप्लेन किया था जैसे जो हमारे समाज में, मनुष्य के समाज और संप्रदाय में एक नेचुरल एनवायरनमेंट की तरह है, और बर्गेस ने एक्सप्लेन किया था जो हमारे समाज से हमारे समाजेर जे अर्बन सिटीज शहरेर पांच जोन्स टाइप्स यहाँ पर है, 5 जोन बर्गेस ने एक्सप्लेन किया था. फर्स्ट जोन, there are 5 types of zone according to Burgess. So zone 1, he said, zone 1 होते हैं जो मेन एरिया, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. कोई भी शहर में एक जोन होती है, वो है सेंट्रल बिजनेस एरिया, मेन सेंटर. और जोन 2 होती है ट्रांजिशन फैक्ट्रीज, जो वहां पर फैक्ट्रीज होती है, जो स्लम होती है, वहां पर ट्रांजिशन होती है. और जोन 3 होती है जो वर्किंग क्लास, जो शहर में जो वर्किंग क्लास के घर होते हैं, जोन 3 में रहते हैं. और जोन 4 होती है जो मिडिल क्लास के रेसिडेंशियल. और जोन 5 होती है कम्यूटर जोन, सबर्ब, जो कम्यूटर जोन होती है जो थोड़ा सिटी के बाहर, थोड़ा जो मेन सिटी में नहीं रहते, थोड़ा सिटी के बाहर जो सबर्ब में रहते हैं, दैट इज द कंप्यूटर जोन. So what Burgess explained here in Unit 6, the Chicago school, which was popular in 20th century, Park says that cities are similar to natural environment. जो हमने environment देखा है, environment बारिश होती है, sunlight होती है, और oxygen required, CO2. So this everything is connected in environment. Same thing जो हमने ecology, natural ecology में जो जानवर में जो प्लेन्स, एबायोटिक और एबायोटिक में एनवायरनमेंट में हमने देखा है, जो सेम थिंग मनुष्य के समाज, ह्यूमन सोसाइटी, संप्रदाय, human societies are similar and they need interaction. So same thing what Burgess said is that in any cities in the world there are 5 types of zone, whether it can be Agartala, it can be Mumbai, it can be Delhi, it can be any places, but there are 5 types of zone. Zone 1 in a city, शहर होने के लिए एक जोन होती है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बिजनेस एरिया, जो सेंट्रल मेन मार्केट एरिया. जोन 2 होते हैं that where there are factories, industry, slums. Zone 3 where there are working class homes, जो लेबर, जो फैक्ट्रीज में काम करती है, जो लेबर, मजदूर, or any person who works, they have a zone, they have a place to stay in that area zone. So zone 4 is a middle class residential where people stay, might be in some places. And in zone 5 it's a commuter zone, it's called suburb are like they are, जो suburb होती है जो main city area में नहीं रहते, जो थोड़ा सा city के बाहर. So like many construction of houses are coming up nearby Lembuchera or nearby Nandanagar. Means little bit, they are part of the city. Like in Delhi, they call it NCR, Noida, Gurgaon. They are not exactly in the main Delhi, but the main
elite, the main industries, the main who are belong to the main elite class, they stay mainly in Noida or Gurgaon. So same thing in cities. There are 5 types of zone. Number one, according to Burgess, he says, number one is the business area. Number two is the factories area. Number three is working class area. Number four is middle class area. Number five is the suburbs. So, next is, what do you understand by Lewis Watt 3 pillars? हमने देखा था in Unit 6, Chicago School, Robert E. Park, they apply nature, जो environment is similar to human societies. And then Burgess talks about 5 types of zone. Cities में 5 zone होते हैं, और अभी लुईस वॉट ने कहा है cities में 3 चीज होती है. Urban, जब urbanism हम कहते हैं, what do you understand by urbanism? अर्बनिज्म का मीनिंग क्या है? 3 चीज होते हैं अर्बन क्वालिफाई होने के लिए. आप कह सकते हैं जैसे जिरानिया इस अर्बन, मोहनपुर एरिया का अर्बन एरिया है, और टेलीबोरा अर्बन एरिया है. मगर लुईस वॉट ने एक्सप्लेन किया था अर्बन होने के लिए 3 चीज जरूरत है. अर्बनिज्म, उसने कहा अर्बनिज्म एक प्लेस नहीं है, बट अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन डिफाइंड बाय 3 फैक्टर्स. और जब हम अर्बन कहते हैं, सिर्फ एक लोकेशन ही नहीं है. सिर्फ लोकेशन के बाद 3 चीज होना जरूरत है. वो है साइज, वो है डेंसिटी, वो है हेटेरोजेनिटी. साइज का उसका नंबर 1, साइज का मतलब है जो पॉपुलेशन हैव टू बी मोर, इट हैव टू बी लार्ज पॉपुलेशन. जब हम अर्बन कहते हैं जैसे जिरानिया, मोहनपुर, मगर मोहनपुर के एरिया, उनके एरिया बड़ा हो सकते हैं, मगर जब उनका पॉपुलेशन कम हो, वो अर्बन क्वालिफाई नहीं हो सकता. दैट इज व्हाट लुईस वॉट सेड. फॉर अर्बन, जब हम सिटी कहने के लिए और टाउन कहने के लिए, अर्बन कहने के लिए पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए, उनके साइज ऑफ पॉपुलेशन. और 2 नंबर में डेंसिटी, द एरिया रिक्वायर्स फिजिकल विथ पॉपुलेशन रिक्वायर्स द एरिया एज वेल. सो पॉपुलेशन कम, जगह ज्यादा कैनॉट क्वालिफाई अर्बनिज्म. एंड दैट्स व्हाई पॉपुलेशन और डेंसिटी एरिया का कनेक्शन होना चाहिए. दैट इज डेंसिटी. और 3 नंबर है, density is in terms of the area, the sizes, the physical sizes. And heterogeneity is in terms of the fragmentation. What it says is that heterogeneity, urban होने के लिए जैसे हायर क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, और डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट बैकग्राउंड. मगर जब आप गांव में देखते हैं, देयर आर, इफ यू गो टू विलेज, जब आप गांव में जाएंगे, so this called the heterogeneity in terms of the fragmentation in the aspect of urban life. According to Lewis Watt, 3
it's always have a connection. So this is the so the next unit 8. Unit 8 is rural urban continuum. So rural urban continuum. That is Robert Redfield. Robert Redfield have rejected the binary divisions that argued communities exist on a sliding scale from folk to urban. So Robert Redfield discussed that the folk societies are small, isolated, homogeneous, traditional, and sacred. That is what I have discussed. Is that mainly Robert Redfield discusses that the folk, the societies, the villages, the rural area are more small, isolated. Homogeneous means where there are similar cultures, similar way of life, similar traditional and sacred. Urban society, it's much more large, different backgrounds, secular individualism. What we see is that there is mass production strategy, a strategy focused on fostering economic growth by prioritizing diverse industry with a geographical area. So what we have seen is that in industry there is different in industry there is whether in terms of the mass production strategy, there is labor productivity, the infrastructure, and the resource scarcity. So in urbanism, industrial growth is a very important, essential part of the thing. And after post-industrial society, in after industrial society, that is by Daniel Bell, where he talks about after the industrial, what it have come is that the rise of technical and professional classes, and the theoretical knowledge of innovation, infrastructure of the service sector, which depends on different growth, tertiary, quaternary or quinary growth. So this Daniel Bell talks about that after in industry, it was mainly the labor, the labor process, the infrastructure, but the post-industrial society have much more focus on the in terms of the centrality of knowledge, the technical side, the IT, the computers, the internet, the network societies. So these are the aspects. So what we have understand today is that there are various what we have seen, what Park and Burgess focus on that that natural ecology and urban system, the society is very similar, they are connected, and urbanism is a way of life where we have given 3 size in terms of the different background, in terms of the density. And Robert Redfield talks about how from folk society to urban society, how they have transformed from village to rural areas. And Daniel Bell talks about from how we are not living in industrial society anymore. We are living in post-industrial society. Post-industrial society, we are focusing much more on intellectual labor, centrality of knowledge, infrastructure, and service sector. That is what Daniel Bell talks about. And so what we can understand is not static, it evolves as city evolves.
as the society in the city evolves from how, and then in modern application, we can tackle the inequality, environment, integration, digital divide. So these are the challenges which we find. Though we find that the industry growth was important, but now we have seen there is inequality, environmental issues, and digital divide, which we need to tackle. So if you have any question, you can ask me. In the meantime, there was actually some technical issues and network, which I could not able to might be conveyed in the meantime. But if you have any query, you can ask me personally. Also, this PowerPoint will be shared to you. Thank you so much for today.